Hello everyone, very good evening. I hope you all are good. Okay. So today in the class we are going to start with new topic that is moving charges and magnetism. ठीक है? You all must have a bit idea of this magnetism topic. You must have studied just the introduction of it. I mean, very little was there to study in class 10th, but still that was enough to make the background of magnetism. I mean, from where it is arising, what is this magnet thing? Okay. So, how many of you remember reading it in class 10th? How many of you have basic idea of what is this magnetism? Sorry, for some reason I cannot turn on my camera, so I'm really sorry for that. Yes, in class 10th, you people studied about magnetism. ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट थिंग. यस, नोबडी, नथिंग. मैग्नेटिज्म में कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? आई जस्ट वांट टू नो. In class 10th, it was there, right? You have any idea of this? Okay, Kiran. ठीक है. ठीक है. So आज के क्लास में पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी, so that yes, 10th में you all must have studied the basic of it. Yes, Chetra. That's true actually. We studied, right? So magnetism में आप लोगों ने पढ़ा होगा, but couldn't remember. No worries. So let's talk about first the magnet. The magnet we played with in our childhood. Everybody, I mean, I don't know about you people, but 90s kids definitely played with it. So magnet हमने खेला है. This, I mean, there is a magnet sort of thing. If you bring two magnets closer to each other, you will see there is attraction. ठीक है? We have felt it. And magnet के लिए, we say that it has two poles. One pole is called North Pole. One pole is called South Pole. ठीक है? Just like we deal with charges, one charge we call as positive charge, another charge we call as negative charge. Similarly, here, in the case of magnet, one end of the magnet, or we say that magnet has two poles. So this magnet has two poles. One pole is called North Pole. One is called what? This is called North Pole, and another is called South Pole. So you can treat North Pole like positive magnetic charge. नॉर्थ पोल को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज. ठीक है, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे. अभी तो मैं बार मैग्नेट तुम लोगों को नहीं पढ़ाने जा रही. दैट वी विल रीड लेटर. लेकिन मैं स्लाइड तुम्हें बता रही हूँ. दिस वी कैन कंपेयर लाइक with positive charge, positive electric charge, and here north pole is assumed like positive magnetic charge. ठीक है, and this south pole is treated as sorry, negative मैग्नेटिक चार्ज. ठीक है, तो जब भी आप मैग्नेट देखते हो ना, मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है. ठीक है, एंड just like we studied electric field, right? We studied that if there is a positive charge, magnetic field lines will come out like this. We studied this thing, right? And if this is a negative charge, electric field lines will end at. And if there are two positive and negative, one positive and one negative charge close to each other, अगर dipole के लिए आप बनाते थे electric field, then field lines will look, some field lines will come from positive end at negative. It will look like this. है ना, कुछ ऐसा दिख रहा था. If you all remember, then sorry, not this, this. ठीक है, like this. So here, if you draw, just like in the case of electric charges, electric field exists. Same way, for magnetic charges, that is for magnet, magnetic field exists. ठीक है?
सो मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ कैसे करते हैं, अगेन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, बट जस्ट नाउ मैं तुम्हें बोल दूं, सिंस नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, एंड साउथ पोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एंड कर, ठीक है। दिस अगेन वी विल रीड लेटर, this we are not going to read now, these things we will read later. So at north, from north pole you will feel like electric field lines is coming out, and at south pole you will feel like magnetic field line is ending, ठीक है। And in the magnet there is field lines inside also, from south to north, that we will study later. But just now I just wanted to make you familiar with the term magnet, the term magnetic field. So whenever you have magnet in the surrounding, if you have magnet, then there will be magnetic field in this region. In this region there will be what? Magnetic field, if there is magnet. But our topic as of now is magnetic effect of electric current. So there was one scientist, Oersted. You all must have studied this in class 10th. So Oersted observed that when there was, he noticed a current carrying wire. I mean, he was in the laboratory, and there he was having a current carrying wire like this. And when he brought a magnet closer to it, a magnet or needle, magnetic needle or magnet, magnetic needle means वो magnet है, ठीक है। So when he brought magnet closer to this current carrying wire, he noticed that here attraction or repulsion is happening. Depending on the nature, attraction or repulsion happened. Yani ki what he noticed that force is acting on the magnet. And magnet पे force कब लगता है? बचपन में हमने magnet खेला है. If you have, then you must be knowing it. When we bring if there is one magnet like this and another magnet this, if when we are taking it closer to it, then you will feel like it is getting attracted towards it, right? ठीक है। सिमिलरली अगर साउथ पोल को साउथ के पास ले जाओगे तो रिपल्सन फील होगा, डन है। तो अगर मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है, किससे अट्रैक्ट होगा मैग्नेट? Magnet will get attracted by another magnet. So let's say here magnet, this is magnet 1, this is magnet 2. So one is attracting 2, one is attracting 2, right? So one का magnetic field है इस region में, and this magnetic field is basically attracting magnet 2. ठीक है, जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज से कैसे इंटरेक्ट करता है? थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इफ दे आर एट अ सेपरेशन आर, देन there is, even if there is vacuum in this space, even if there is vacuum, force will act on the negative charge minus q, and force value we already have studied, kq square by r square. Here it will be attracting. Even if there is vacuum, force is acting because that interaction is happening through the electric field. Similarly here, if magnet 1 is attracting or repelling magnet 2, it is happening because of what? Magnetic field of the magnet, ठीक है। Similarly come to the Oersted reflection in the needle. Needle is getting affected by the presence of current carrying wire. It means this current carrying wire is generating electric field, ठीक है। सो उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, देखो उन्होंने मैग्नेटिक नीडल लिया, ऐसा नीडल का ऐसा डायरेक्शन मींस दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ. So magnetic needles are kind of needles. They are magnetic needles, ठीक है. So he took so many magnetic fields. Let's talk about it. He kept so many magnetic fields in a space. बहुत सारे random magnetic needles उन्होंने ऐसे ऐसे space में डाल दिया. Now what he did is, now he did one thing. He kept here a current carrying wire. And when he kept here a current carrying wire, force started acting on these magnetic needles, ठीक है। Force started acting on these magnetic needles, and since force is acting on magnetic needles, it has a message, and the message is that this current carrying wire is generating magnetic field. So current carrying wire generates magnetic field. How we are getting to know this? मैग्नेटिक फील्ड को बी फील्ड लिख सकते हैं.
बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से इंडिकेट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो बी फील्ड। देन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई फील्ड कहते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को एम फील्ड नहीं कहकर बी फील्ड कहते हैं, ठीक है। सो करंट कैरिंग वायर generates magnetic field in its surrounding. Why we concluded this thing? Because this magnetic needle is kept in a space, no motion happening, no force acting, but the moment we kept a wire, current carrying wire, force started acting on these needles, and these needles got arranged in this sense, in a circular sense. अगर तुम लोगों को याद हो, एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तुम लोगों ने, निडल कुछ ऐसे अरेंज हो जाता है। सो निडल इज गेटिंग अरेंज्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब तुम लोग याद करो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि if there are electric dipoles, if there is electric field in a region and there is an electric dipole, then electric dipole aligns itself in the direction of magnetic field, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबको पता है ना। मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस। डाइपोल स्टेबल होने के लिए कौन से डायरेक्शन में रहेगा? डाइपोल स्टेबल होने के लिए खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेगा, ठीक है। उसी तरह से मैग्नेटिक नीडल की अगर आप बात करो, तो नीडल कहने का मतलब क्या है, इसके पास साउथ और नॉर्थ पोल दोनों ही है, यानी कि ये डाइपोल है, राइट। सो डाइपोल किधर अलाइन होता है? फील्ड के डायरेक्शन में। और यहाँ पे सिंस आफ्टर स्विचिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट needles are getting aligned in circular trajectory, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हियर इज सर्कुलर इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और फील्ड के डायरेक्शन में तुम्हारा ये निडल क्या हो गया? अलाइन हो गया। सो अप टू दिस टाइम आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट current carrying wire carries current carrying wire generates magnetic field, ठीक है। इन डिटेल वी विल रीड कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं तो क्या होता है, जस्ट द वे वी स्टडीड व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, we have studied these things in detail already. For magnetic dipoles also we will read, but for now I just want to make clear that if मैग्नेट का सोर्स क्या होगा, एक होगा तुम्हारा नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो आप देखते हो घरों में, जो ब्लैक कलर का स्लैब्स होता है, दैट इज नेचुरल मैग्नेट, that is found in nature. Magnet you can generate also, create also. How? By allowing current pass through a coil or through a straight current carrying wire. ठीक है? So thing is, current carrying wire generates magnetic field. This is the fact. इतना हमें जानना जरूरी है, क्लास 10th का ये सब नॉलेज है, वी शुड नो अप टू दिस पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सो we will read magnetic force on a moving charges. That is, if you have charge particles moving in a magnetic field, then what sort of force will act on it? If force will act, then what is the value of force? ठीक है? Then we will read magnetic force acting on a current carrying wire. Then we will read charge का motion in a magnetic field. These topics are actually quite important. ठीक है? इसमें हमें चीजें थोड़ी थोड़ी समझनी है सही से, सो वी विल डू वन बाय वन। आई विल मेक थिंग्स इजियर, डोंट वरी, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। Magnetic force on a moving charge. So we already know if there is electric field, there is charge, force will act. Now we are going to talk about, let's say there is a magnetic, ये जो space मैंने बनाया है ना, let's say यहाँ पे एक charge Q है, which is initially at rest. So initially means at time t equal to 0, speed of particle is what? 0. It is having no speed. I am telling you. Okay. Now what we are doing is we are having magnetic field in this region. So ये जो green डब्बा है ना, green डब्बा का whatever space is, in that space there is magnetic field. ठीक है. So I have told you magnetic field is not equal to 0. There is magnetic field. Done. चार्ज इज इन रेस्ट। सो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? सो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज 0 इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज 0, देन देर इज नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग। ठीक है। सो
he observed that when you are keeping a charge at rest in magnetic field, no force will act on the charge particle. ठीक है? That was the observation. Okay, Tanush, let me know. You have raised your hand. Okay, I need to unmute. I will. Just give me some time. Yes. Will explain. Sorry. You asked something, I couldn't get you. Yes. Anything not getting across, let me know. Okay. Okay, explain again. What I'm trying to tell you is there is a space, there is a region, ठीक है? ये region मैंने boundary दे रखा है. So there is a region like this. In this region there is magnetic field. So in this region there is magnetic field. Field lines मैं बना नहीं रही हूँ अभी. So there is magnetic field in this region, and then there is a charge kept in that region. That charge is at rest. So if charge is at rest, that is speed is zero, then it was observed that magnetic force acting on the charge is what? Zero. So ये observation था. Just imagine you are in a laboratory, you are having a region with magnetic field. In that region, you are taking a charge and keeping it there in rest. And then you are able to see that it is in rest all the time. It means no force is acting on the charge. ठीक है? So observation पहला ये था कि if you are keeping charge in rest, then magnetic field present in the region is not applying any force on the charge. First thing. ठीक है? So this was first observation. Second में what he did is he gave it some velocity. ठीक है? So he gave it some velocity. Let's say velocity he gave it in x direction. ठीक है? Towards this direction, towards right. And let's say magnetic field in that case was also in this direction. Done it? And then also the observation was that if again magnetic force was zero when if speed is not zero. ठीक है? Speed zero नहीं है, but velocity is parallel to the magnetic field. Velocity का direction क्या है? Magnetic field के direction से parallel. ठीक है? So this was the observation. Again, third observation क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? Now he did another thing. Magnetic field को reverse किया. So this time, again force was zero. Case was what? Case ये था कि speed is still not zero. Charge particle is moving. But this time, if velocity is in this direction, then magnetic field was in this direction. That is, angle between velocity and magnetic field was how much? It was 180 degree. If this is the direction of velocity, this was the direction of magnetic field. So basically हो क्या रहा है? एक रीजन में magnetic field है. He is doing experiment. Experiments are what? Initially, he gave no velocity to the charge, no force. Second case में क्या किया? He gave it velocity, but in the direction of magnetic field, still no force. Now what he did is he gave it velocity again, but this time opposite to the direction of magnetic field, still force is zero. Fourth case में what he did is he applied magnetic field perpendicular to the direction of velocity. ठीक है? So this time force was not zero. ठीक है? If u is equal to not zero and angle between magnetic field and velocity was what? It was 90 degree. ठीक है? Then he tried doing one more thing and he did one thing more. He kept angle something different other than 0, 180 and 90. So let's say this is acute angle. In this case also, force was not zero. But in all cases, what is same? Speed is not zero. ठीक है? So when the magnetic force is acting, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो magnetic force तब लग रहा है when charge is having velocity. But that is not enough when charge is not having velocity in the direction of magnetic field.
or opposite to the direction of magnetic field. That is, when angle between velocity and magnetic field is not 0 degree and 180 degree. एंड ये सारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड बी. सो ही गेव द फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि magnetic field was getting maximum when angle was 90 degree, 0 when angle is 0 degree, 0 when angle is 180 degree. ऐसे भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप ब्रेक करते हो, आप क्या लिखते हो? क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है. सो थीटा इज व्हाट? इफ थीटा इज 0, साइन 0 इज 0. इफ थीटा इज 180 डिग्री, साइन 180 इज 0. इफ थीटा इज 90, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू यू विल गेट. And for theta less than 90, sine ka value will be less than 1. So force will be smaller than QVB. ठीक है. So what is the formula of force we are getting? Formula of force that we are getting is force is equal to QV cross B. That is force of acting on a charge moving in magnetic field. Done it? So if charge is moving on magnetic field, force will act, and force will act according to this formula. Now, since this is a force, force will have direction. Okay? And since this force is a cross product of two vectors, V and B, force का जो direction vector होगा ना, that direction of force will be perpendicular to the direction of velocity vector. Also, direction of force vector will be perpendicular to the direction of magnetic field vector. This is the property of cross product, right? You know, cross product आप लोग जानते हो ना. If you write C vector is equal to A cross B, what does it mean? It means that vector C is perpendicular to A, vector C is perpendicular to B. So this is how we calculate cross product, right? So यहाँ पे जो force है, this force will be perpendicular to velocity, this force will be perpendicular to magnetic field. Now in the case of cross product, अगर अगर दिया है हमें velocity in the I direction, magnetic field in J direction, we can calculate direction of force. So I J और K के term में, if you are asked to calculate the values, then you know how to calculate I cross J, J cross K, K cross I, right? If you don't remember, I will let you know here. So I cross J को हम क्या लिखते हैं? I cross J को लिखते हैं हम, जैसे ऐसे क्लॉकवाइज चलो, आप क्लॉकवाइज चलोगे, आई क्रॉस जे, जे के बाद क्या बचा है? के. तो इसका वैल्यू हो जाएगा के. नाउ जे क्रॉस के, इफ यू डू जे क्रॉस के, व्हाट इज लेफ्ट? आई. तो जे क्रॉस के इज व्हाट? आई. नाउ व्हाट इज दिस के क्रॉस आई? के क्रॉस आई विल बी जे. सो हियर के क्रॉस आई इज जे. Now the thing is, if you move in anti-clockwise direction, let's say you are moving in this direction, then answer you will be writing in negative. जैसे अगर आप लिखोगे I cross K, that is you are moving in anti-clockwise direction. So I cross K will be equal to minus J. Similarly, if you go like this, K cross J, so K cross J will be equal to how much? Minus I cap. So this way we can calculate direction of magnetic force acting on the charged particle if velocity direction is given and magnetic field direction is given by using cross product rule. Anybody having any doubt so far? If yes, let me know. अभी तक हमने बस एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू वी क्रॉस पी. किरण, you are stuck with the direction or the formula? Okay, formula. Formula you are telling? Force का in the calculation of direction or formula? ओके, सो फॉर्मूला सिंपल है. तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें. मैंने इतना कुछ इसलिए लिखा क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है. क्यू वी क्रॉस बी. सो इफ देयर इज अ चार्ज क्यू which is moving with velocity v in magnetic field b, then magnetic force acting on the charge will be equal to qv cross p.
So this is basically formula. If you are having any charge kept in magnetic field and that is moving with certain speed, then magnetic force का formula है Q V cross B. From why cross product? Why not dot product? क्योंकि we can see from here, uh, force is zero when angle is 0 degree, and value of cross product is zero when angle is 0 degree. Here also again force is zero when angle is 180 degree. You can see the observation 3. From observation 2 and 3, we can see that when angle is 0 and 180 degree, force is 0. So definitely it cannot be dot product of velocity and magnetic field. Done it? And also we saw that from observation 4th and 5th, that value of force acting is maximum when angle is 90 degree. And you know that maximum value of sine is what? Sine is when theta is 90 degree. So basically the force that you are getting is the cross product of velocity and magnetic field. ठीक है? So force का formula that we are getting is Q V cross B, where Q is the amount of charge it is having and B is the value of magnetic field present in the region. ठीक है? Is it okay? Okay. Okay, you will get to understand it more as we will do some questions and all. ठीक है? So सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, let's do some work. Velocity, तुम्हें डायरेक्शन बताना है फोर्स का, दोनों ही केस में मुझे डायरेक्शन बताओ. फर्स्ट केस में वेलोसिटी इज अलोंग द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस. ठीक है? टुमारो देयर विल बी क्लास. टुमारो इज सैटरडे, देयर विल बी क्लास. Yes, let me know what direction of forces you are getting in the first case and second case. Yes, calculate the direction. Cross product you have done or not. Even if you have not done, second Saturday है. Okay. So second Saturday को parents meet होता है, I guess, in your schools, right? So, but you people are not in the school, right? You can talk with the Avanti team. I mean, you can contact somebody for the, or you can, if you're in the school, then you can talk with your teachers. They can convey this to Avanti team. Okay? But if you're at home, then there is no worry, right? चलो डायरेक्शन बताओ सभी लोग, क्या आएगा बताओ. ओके, धनुष फर्स्ट का. ठीक है. सही से देखो, तुमने डायरेक्शन गलत बताया. क्या हुआ? कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा. क्रॉस प्रोडक्ट करना है. डू द क्रॉस प्रोडक्ट. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें ही हेल्प करेगा तुम्हें कॉन्सेप्ट में. दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू डू. जस्ट सी हियर, आई टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट इट. किरण, एवरीबॉडी गिविंग मी रॉन्ग आंसर्स. देखो वेलोसिटी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी क्रॉस बी. सो बेसिकली डायरेक्शन निकालने के लिए यू हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी. सो वी का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज आई कैप. बी का डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस, दैट इज क्रॉस के. सो आई क्रॉस के विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आई जे के.
I cross K you are doing in anti-clockwise direction, right? And when you do things in anti-clockwise direction, you write the answer in negative, right? So I cross K is minus J, not J, not y-axis, negative y-axis. It will be negative y-axis, not positive. Are you getting me? Is this, I mean, I cross K is minus J because you are traveling in anti-clockwise sense. Direction निकालने का मैंने ट्रिक बताया ना तुम लोगों को. I, J, K को लिख लो आप, ठीक है? If you are traversing in clockwise direction, आंसर को पॉजिटिव में लिखना है. If you are going in anti-clockwise direction to write the answer, if you are turning in anti-clockwise sense, then negative. ठीक है? ओके किरण, आई होप सो. सेकेंड केस में अगर आप देखते हो, सेकेंड केस में क्या होगा? सो फर्स्ट केस में हमने निकाला, सेकेंड केस में क्या लिखा हुआ है? क्यू अगेन वी क्रॉस बी, वेलोसिटी इज इन विच डायरेक्शन? के कैप. मैग्नेटिक फील्ड इज इन विच डायरेक्शन? जे कैप. के क्रॉस जे इज व्हाट? संजना, ओके, प्लस या माइनस ये बताओ. यस धनुष, दैट इज करेक्ट. के क्रॉस जे करना है तुम्हें. के क्रॉस जे ऐसे जा रहे हो, आंसर क्या होगा? प्लस कैसे आ रहा है देखो तो. के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना तुम. के क्रॉस जे ऐसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, देन अनदर लेफ्ट इज आई, तो आंसर विल बी नॉट प्लस, इट विल बी माइनस आई कैप. Always remember when you turn in anti-clockwise sense, answer negative में लिखना है. When you are turning in clockwise sense, answer positive में लिखना है. So again I am repeating I, J, K. If you go turn in clockwise sense, I cross J, then answer will be K. If you do K cross J cross K, again clockwise, answer will be I. If you do K cross I, again clockwise, answer will be J. But if you start moving in opposite sense, that is anti-clockwise, I cross K minus J, K cross J minus I. ठीक है? So you should know how we calculate this direction. यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. आई मीन बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से. अच्छे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस पोर्शन. So these things are very basic thing and important thing. You should know how to calculate direction of force. So अभी तक हमारा observation क्या हुआ? We learned what is the value of force acting on a charged particle moving in a magnetic field. ठीक है? And then we studied how to calculate the direction of force. Done. एक्स एक्सिस और आई कैप में नहीं, आई कैप के डायरेक्शन आई कैप लिखोगे क्योंकि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मींस यूनिट वेक्टर भी राइट. ठीक है? सो यू वोंट बी राइटिंग एक्स एक्सिस, यू विल बी राइटिंग आई कैप, जे कैप, के कैप. तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर. ठीक है? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? You already know. Along x-axis, unit vector is I cap. Along y-axis, it is j cap. Along z-axis, it is k cap. And similarly, for negative y-axis, minus I cap. For negative y-axis, minus j cap. And for negative z-axis, minus k cap. So that way we can write. Yes, Sanjana, we will do questions, but आज नहीं. अभी बेसिक सीखने जाते. कल के क्लास को स्टार्ट करेंगे with one question. ठीक है? So अभी हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज योर क्यू वी क्रॉस बी. ये सीखा. उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड ये जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. एंड हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन. ठीक है संजना? ठीक है, चलो. नाउ वी विल लर्न वन मोर थिंग, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर. Just now we wrote the formula of magnetic force acting on a moving charge. If there is a charge moving, then magnetic force acting is Q V cross B. But if there is a current carrying wire kept in a magnetic field, let's say here in this region there is a magnetic field, and then there is current flowing through this wire. Will this wire experience force because of magnetic field present in the region? Yes, it will. क्यों? क्योंकि when there is a charge moving,
it experiences force. And current is what? Current क्या है? Current is rate of flow of charge. It is dq by dt. So when we talk about current, we talk about there are free charges moving. And if there are free charges moving kept in magnetic field, force will act. ठीक है? So on this current carrying wire also, force will act because of magnetic field present in the surrounding. Now we need to calculate the value of this magnetic force acting on the current carrying loop. तो देखो मैं इसी फॉर्मूला को यूज करके निकाल दूंगी. उससे पहले लेट्स डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ दिस वायर. लेट्स से लेंथ ऑफ वायर को आप लिख डालो. सपोज कर लो लेंथ ऑफ वायर इज हाउ मच? इट इज एल. लेट्स से area of cross section, area of cross section, this is A. And let's say number of charge particle per unit volume. हमने पढ़ा है ना number of free charge carrier. So number of free charge carrier per unit volume किस लेटर से इंडिकेट करते हैं हम इस चीज को? If you remember, number of charge carrier per unit volume, we indicate it by letter what? याद है किसी को? करंट में पढ़ा है हमने number of free charge carrier per unit volume. We indicate it by letter what? Anybody? Come on, guys. Tanush, that is electric field का notation. Be a good boy, please. Please read. तुम लोग मुझे डिप्रेशन दे रहे हो नहीं पढ़ के. Oh my God, Kiran, क्या है ये? This is E. This is charge on the electron. It is the notation of charge on one electron, right? Come on, any good person here in the classroom? U, that is speed का notation. Tanush, E naught, that is permittivity. अब मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो. This is too disappointing. Anybody? श्रुति, श्रद्धा, सानू, संजू, रंजू, निराली, नवोदयन, महेश, let me know. लतिका, चित्रा, किरण, you told me, ध्रुव, आदि. कोई तो आओ यार सामने. नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम. चलो मैं हिंट देती हूँ. करंट का फॉर्मूला माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आई कैलकुलेटेड. व्हाट वाज द फॉर्मूला? इफ यू रिमेंबर देन यू कैन लेट मी नो. म्यू. म्यू so far I didn't use in physics. That we will start using after Biot-Savart law, which I have not taught it. पिट जाओगे तुम लोग. अभी सामने होते ना 2-4 हाथ लगाती. तुम लोग पिटने वाली हरकत कर रहे हो अभी. करंट का फॉर्मूला याद है किसी को? चलो अब याद नहीं है ना, मैं लिखती हूँ और तब मैं जानना चाहूंगी तुम्हें याद है कि नहीं. धनुष, डेंसिटी में नोटेशन पूछ रही हूँ, बताओ. अब बताओ इनमें से कौन सा है? तुम लोग तो जमाना गुजार दोगे. पढ़ नहीं रहे हो. अब मैं समझ गई तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो. जीरो. Really disappointed. A is area of cross section. Yes, Kiran. This is too bad. N was what? Number of free charge carrier per unit volume. E charge on electron. देखो तुम लोग जितनी बार कहते हो ना मैं रिपीट करती हूँ, है ना? Whenever you say you are having doubt, I repeat. I go time and again. But you people are not putting in any sort of effort. This is one-way traffic already. Just I am putting in effort. You people are not doing anything. I mean, you don't know what is this N. What is this number of free charge carrier per unit volume? You don't know. This is too disappointing. Seriously. Anyway, चलो ठीक है. So let's calculate the force. Force क्या होता है तुम्हारा? Force होगा Q V cross B. ठीक है. Q का वैल्यू क्या होगा? If this is a conductor of length L, it has area of cross section A. What will be the value of charge inside it? ठीक है. So let's
write it here. Charge क्या होगा? Total volume क्या है? If you write here total volume of the conductor क्या है तुम्हारा? Volume is A into L, area of cross section into length. That will give us volume, right? Volume of cylinder क्या होता है? Pi r square L. Pi r square is what? Area of cross section. L is what? Length. So this is this. Now what will be the number of charges? Number of charges, let's say total number of charges is n. So this will be equal to small n into total volume, because n, small n is number of free charge carrier for unit volume. So in unit volume there are this many charges. In AL volume there will be n into AL charges. So what is the value of charge on one free charge carrier? E amount of charge is there, equal to charge on electron. So on this many number of charge carriers, there will be how many charges? E into n. How many? What will be the value of charge? E into n into Al. So this is the value of charge present in this conductor of length L, area of cross section A, through which current I is flowing. ठीक है? So let's now put the value. And if conductor के अंदर if charge carriers are flowing, they flow with what velocity? What velocity is that? Anybody if recall? We gave a particular name to the velocity of charge carrier inside conductor. VD. Yes, Kiran. Thank you. So that is called drift velocity. So put here Q ka value E into N into A into L. V का वैल्यू आप लिख डालो VD. Let's indicate it by VD. Cross magnetic field. ठीक है? Now let's talk more about the concept. Uh, we are talking about positive charges. ठीक है? So if current is flowing in this direction, upward direction, as shown in the diagram, then charge particle, that is free charge particle, they are also flowing in this direction. That is direction of VD. Direction of VD. VD is what? Velocity of charge particle. So VD का direction क्या होगा? The direction in which charge particle is moving, and that is in the direction of current. ठीक है? So basically VD का direction क्या होगा? Current के direction में है VD. Is in the direction of current. And here if I define length as a vector, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक काम करने वाले हैं, लेंथ को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, एंड दिस वेक्टर डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो मैं लिखने जा रही हूँ, एक बार तुम लोग ध्यान से देखना. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इस वीडी को मैं बाहर लाऊंगी और वीडी की जगह यहाँ पे एल वेक्टर लिखने वाली हूँ. ठीक है? सो ANEVD एंड L क्रॉस B. ठीक है? सो बेसिकली L क्रॉस L वेक्टर मैंने लिखा है. दिस L वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ VD. दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बेसिकली. ठीक है? सो ANEVD is what? Current. So force acting is how much? IL cross B. Where L is a vector and direction of this L vector is where? Direction of this L vector is in the direction of current. ठीक है? So if I summarize it, तो summary में मैं ये बोलूंगी, we got a force acting on a current carrying loop, and force का फॉर्मूला क्या मिला मुझे? फोर्स का फॉर्मूला मिला है here, F is equal to IL cross B. So अगर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड will be already given, direction will be given, L का direction won't be given in the question, but you will be given the direction of current. So L vector is in which direction? In the direction of current. Always याद रखना. This is in the direction of current. ठीक है? So simply we use the formula QV cross B to reach to the formula force acting on a current carrying wire is IL cross B. So this is also cross product of length and magnetic field vector. ठीक है? Anybody having any doubt? Let me know. If anyone has any doubt, you can let me know.
नोबडी? चलो ठीक है, चलो ठीक है। इफ नो डाउट देन लेट्स मूव अहेड। मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन है ये, इसके बारे में मैं बाद में भी डिस्कस करूंगी। सो बेसिकली दिस दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज, ये कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है? क्योंकि आई विल डू इट इन डिटेल अ बिट, सो कल की क्लास में करेंगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। यस, थिंक अबाउट इट, डू इट, ट्राई थिंकिंग अराउंड द क्वेश्चन। तो बेसिकली हियर मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन देखो, यहाँ पे जो नोटेशन दिख रहा है ना, मैं बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तुम लोग जानते हो ना, जैसे दो डायरेक्शन होता है, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक श्रद्धा। ओके ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो ये जो डॉट डॉट है ना, दिस इज बेसिकली माइनस, सॉरी प्लस के कैप का डायरेक्शन है ये। एंड जो क्रॉस दिख रहा है ना, अभी के लिए इतना समझो, ये जो क्रॉस है ये माइनस के कैप का डायरेक्शन, ठीक है? सो दिस डॉट मीन्स के कैप का डायरेक्शन, क्रॉस मीन्स माइनस के कैप। डन है? नाउ हियर क्रॉस इज गिवन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इन माइनस के कैप डायरेक्शन। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, क्या होगा? श्रद्धा वेरी गुड। संजना, ओके, हाउ यू आर गेटिंग दिस? कोई भी स्मॉल सेक्शन ले लो वायर का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करके देखो। ओके, आई गॉट 3 रॉन्ग आंसर्स। नो, let me do this for you now. So what is given here? Magnetic field is in the inward direction, right? Magnetic field किधर है? Inward direction में है. And current is flowing in this direction. So this is a complete loop basically. If you focus on the loop, let's focus on this segment of the loop. So here current is moving in this direction. So इस सेक्शन को अगर मैं थोड़ा इनलार्ज करके बताऊं, तो ये सेक्शन ऐसा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है? आई हैव इनलार्ज्ड इट फॉर योर क्लैरिटी। यस संजना, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। सो करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? एट द टॉप एंड आई एम एट दिस सेक्शन, आई एम कैलकुलेटिंग, ठीक है? करंट इज फ्लोइंग इन दिस सेंस, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। लेट्स कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एल क्रॉस बी। So L is in which direction? It is in the direction of I cap. So I cap cross magnetic field is in minus K cap. अब आप डायरेक्शन निकाल लो। I क्रॉस K क्या होता है? माइनस J। सो यहाँ पे पहले से ही माइनस है, सो माइनस ऑफ माइनस J यानी कि प्लस J। इट मीन्स इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर, ठीक है? सिमिलरली आप यहाँ पे निकाल लो फोर्स का डायरेक्शन।
इस सेक्शन को अगर मैं इनलार्ज करके दिखाऊं तो ये ऐसा है, और इस सेक्शन में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे. सो फ्रॉम दिस सेक्शन हाउ इट इज डिफरेंट हियर द, यहाँ पे अगर आप फोर्स निकालोगे, डायरेक्शन, अगर फोर्स का डायरेक्शन निकालते हो तो क्या होगा, current direction is towards minus I cap. So minus I cap cross minus K cap. And this will give you minus J cap. क्योंकि minus minus will get cancelled. I cross K is minus J. So minus J. Minus J means at this point force acting is in minus J direction. Means towards negative x axis. That is in this direction. ठीक है. Similarly, you calculate force on this small portion, you will get force acting in this direction. You calculate force direction on this, you will get force acting on this direction. Overall, it will look like for this portion, force will act in this sense, here this sense. So overall, you will feel like force is expanding. Force is acting outward. So this magnetic force acting here will try to expand the wire. Done it? So answer क्या होना चाहिए? Expand. Move towards positive x-axis. ये तो तब होगा ना when the resultant of this force is towards the positive x-axis. That is not the case, right? Force everywhere is acting outward, and that is why this ring is going to expand. जैसे ऐसा कोई छोटा सा चीज है, तुम हर तरफ से ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, क्या होगा, ये बड़ा होगा, एक्सपैंड करेगा, राइट? सो दिस विल बी द केस, it will expand. Any doubt, anybody? Yes or no? Okay, Sanjana, thank you. Sanju, ठीक है. I will explain once more, don't worry. So what I said is, I said current is flowing like this. So, I mean, how you will calculate the direction of force? Here, the direction of current is changing everywhere. Why? Because this is a circular loop, right? Here, the direction of current is in this sense. Here, it is in this sense. Here, it is in this sense. Here, direction of I L cross B. So basically, we will do cross product of length and magnetic field. Length vector is in the direction of direction of current. So everywhere length vector is changing. How we can calculate force? So for calculate, उसको चेक कर लो, ठीक है. सो अगर मैंने 2-4 सेक्शन लिया था, आई हैव selected this one. I have selected सेगमेंट्स पे जब मैंने फोर्स लगाया ना, जैसे इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, तो दिस सेगमेंट आई हैव exaggerated it for your clarity. Current is moving in this direction, right? So when you will calculate the direction of force I L cross B, so L is in which direction? I cap. Magnetic field is in cross direction, that is minus K cap. And I cross minus K क्या आया हमारा, यहाँ से आप इसको ऐसे सॉल्व करना. I cross K anti-clockwise minus J. So minus of minus J, that is plus J. So here force is acting along the positive y-axis. That is small force here acting is in this direction. Similarly, you calculate force on this section, it will be in this direction. Similarly, here in this direction you will get, here in this direction you will get. Whatever small section you will select, at all small section you will see that force is acting outward like this. So basically, if outward force is acting at all the point of the loop, then that loop will expand. Okay? So this B will be the answer. It is going to expand. Clear? Sanju? Okay. Chalo, ठीक है. So in the next class, we are really going to discuss important things. So I will suggest तुम लोग जो भी आज मैंने पढ़ाया है उसको एक बार सही से चेक कर लेना, ठीक है. मैंने ज्यादा तुम लोगों को पढ़ाया नहीं, मैंने बहुत कम पढ़ाया. ओनली आई helped you calculate. I gave you just 2 formula, right?
force acting on a moving charge QV cross B. And then I gave you another formula, force acting on current carrying wire. So that is IL cross B. Here the only trick is L vector is parallel to the direction of current. Okay? And what else? In this formula, you need to be careful of one thing, that here force is perpendicular to velocity and force is perpendicular to magnetic field. In the next class, we will discuss about the trajectory of charge particle moving in magnetic field. Okay? So we have seen ki force kya lagega. What will be the trajectory? How it will move because of this force acting. In what path you will move, it will move, right? Will it move in a straight line? Will it move in circular path? Like that, we will discuss in the next class. Okay? So everybody keep reading more, keep doing more number of questions, keep practicing things, then only you can make things work. ठीक है? तो सभी लोग सही से पढ़ा करो. Okay? चलो ठीक है. Everybody take care of yourself and keep being regular like this, but also keep reading at your homes. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Sanjana, you can focus on. I will tell you as of now. First, focus on NCERT. Go through questions of NCERT. They are not bad. It is underrated book. And then I will tell you to do questions from H.C. Verma. I know in H.C. Verma there are so many number of questions, but you just pick some 10 or according to your time. ऐसे तो time मिले तो सारा ही कर लो. But अगर कम time मिलता है, only go with diagram वाले questions. Only diagram questions you can do from here. ठीक है? डायग्राम इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सिलेक्ट करने में तुम लोगों को इजी होगा. सो आई टोल्ड यू कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस कर लो. थैंक यू किरण. बाय बाय. बाय संजना. बाय बाय.